Assalamu alaikum. Good morning. We are discussing today the male-related infertility and treatment of the male-related infertility. Dr. Farzeen, over to you. Good morning, everyone. Today I'm going to present about treatment of male infertility. अच्छा, The सबसे object- पहले एक मिनट व्हाट इज इनफर्टिलिटी? कोई एक बता दे, कोई माइक ले लो, माइक लो, ऐसे ऐसे बता दो भाई, किसी तरह भी बता, कुछ जो समझ आया वो बता दो. टू कंसीव, इनएबिलिटी टू कंसीव, नहीं कितनी देर के लिए? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो. देखो, बोलने की आदत बनाएंगे ना तो फिर वहां पे बोल सकेंगे एग्जाम में, वरना तो आप मेरी तरह रह जाएंगे. ये जो है बाद में सीखते हैं ना सब. ठीक है जी. When the person has never been achieved the pregnancy for greater than 1 year, then it is primary infertility. Okay, so inability to conceive a child for 1 year with a unprotected intercourse. ठीक है, so this is the whole definition of infertility. बता देगा कोई और? भाई सलमान साहब, आप इसको दोहरा दें कि क्या समझ आया आपको. Unable to conceive for more than 1 year with अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. ठीक है, तो रेगुलर इन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो ये पूरी डेफिनेशन है कि एक साल अगर आपके पास अगर कोई एक कपल आ जाए 2 महीने के बाद कि यार बच्चा नहीं हो रहा, तो आपको उनको कहें, सिखाएं सारी चीजें, और फिर उसके बाद उनको कहें कि एक साल पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ, इफ देयर इज नो इशू. नो इशू का मतलब ये, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि नो इशू, तो इसका मतलब ये है कि जो है कंसीव नहीं किया गया. ठीक है, तो उसमें फिर आप जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने में सबसे पहले तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें करते हैं, दोनों पार्टनर्स की हिस्ट्री एग्जामिनेशन. लेकिन उसके बाद फिर क्या करते हैं? सबसे पहला टेस्ट क्या करना चाहिए? सेमेन एनालिसिस. ओके, तो सेमेन एनालिसिस करने के लिए आप पेशेंट्स को क्या बताएंगे? व्हाट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ सेमेन एनालिसिस? जुबैर साहब बताएंगे हमें. So no sexual intercourse for at least 5 days, and provide the sample in a very comfortable place and no hurry. And one more thing, and it should be examined within 30 minutes to 1 hour. 1 hour. Yes, sir. ठीक है, और ये जो सैंपल देना चाहिए वो वहीं लेबोरेटरी में यूजुअली देना चाहिए, और जो कंटेनर होगा उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कि स्पर्मेटोसाइट करेगी. ठीक है, यानी स्पर्म को किल करेगी. ठीक है, तो दीज आर द प्री रिक्वेस्टेड ऑफ गिविंग द सैंपल फॉर सेमेन एनालिसिस. एक और कोई रिपीट करा दो. बिलाल साहब, आप पोस्ट कॉल नहीं थे, नहीं है ना आप पोस्ट कॉल? चलें जी सर. The semen should be confined. There should be no. There should be no. for Yes, 5 days. definitely there should be no intercourse for the 5 ये days. क्यों कहा गया है 3 से 5 दिन के नहीं कर? Sir, because sperm motility it will increase, and definitely if production of, will increase because of the production sir. of the sperm 72 hours लगते हैं. चलो Yes, sir. आगे. And the container should not contain any chemical with the spermicide that can kill the sperm, and it should be provided within a comfortable place, and it should be examined within the 30 minutes to 1 hour of the sample provided. And preferably it should be given at the laboratory where it should be examined. Okay, और अगर आप लोग सपोज कि आप नहीं देना चाहते वहां पे, तो फिर क्या करेंगे? उस सैंपल को कैसे लेके जाएंगे? सैंपल को आप जो है वो उसमें जो आपका जो है कंटेनर है उसमें देंगे, और फिर उसके बाद आप अपने पॉकेट में रख के और अपनी बॉडी टच के साथ लेके जाएंगे, और लेकिन विदिन 30 to 60 मिनट्स आपने उसको पहुंचाना है. ठीक है, सही. चलें. The objectives of this presentation is to review about the anatomy of male reproductive system, to review the physiology of the male reproductive system, to review about the ejaculatory duct obstruction and transurethral resection of ejaculatory duct, to learn about vasectomy, vasovasostomy, and vasoepididymostomy, to learn about assisted reproductive techniques including IVF, intrauterine insemination, and intracytoplasmic sperm injection, and to review about the adoption.
So over here in this picture, we can see the male reproductive system. Just have a brief review about this. The male reproductive system consists of external genitalia, that is scrotum and penis, and the internal genitalia that consists of the testes, epididymis, vas deferens, and the vas deferens joins with the seminal vesicle to form ejaculatory with the duct of seminal vesicle to form the ejaculatory duct open into the prostatic urethra, and prostatic urethra is used to pass the urine as well as for the ejaculation of the sperm. So where it is opened? At the prostatic urethra? At the prostatic urethra near the utricle. At Level of the verumontanum. at the floor of verumontanum. Okay. So let's also review something about the physiology of the male reproductive system. Over here in this diagram, we can see the hypothalamic pituitary gonadal axis. This axis plays a critical role in the endocrine and exocrine function of the testes. The endocrine function of the testes is the production of the testosterone, whereas the exocrine function is the production of the sperm production. The pulsatile secretion of gonadotropin-releasing hormone from hypothalamus causes cyclic secretion of pituitary and gonadal hormones, also known as the gonadotropin-releasing this is the gonadotropin-releasing hormone that secretes in the pulsatile manner, causing cyclic release of pituitary gonadotropin called FSH and LH. Now, hypothalamus and pituitary are anatomically linked to each other by the portal vascular system as well as the neuronal pathways, thus avoiding systematic circulation. FSH and LH act on the testes. FSH stimulates the spermatogenesis, whereas the LH secretes the production of the testosterone. तो हॉल में से कोई बता दे कि ये क्या बताया इन्होंने, एफएसएच किसको एक्टिवेट करता है और एलएच किसको एक्टिवेट करता है? श्रीजान, बहुत लंबी लिस्ट बनाई है आज इसने। Again, gonadotropin releasing hormone जो hypothalamus से आता है, it activates anterior pituitary to secrete gonadotropin releasing hormone, which that is luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. And follicular stimulating hormone, they act in the receptors in the seminiferous tubule to cause spermatogenesis, that is the production of sperm from primordial germ cell. And similarly, luteinizing hormone is responsible for the production of testosterone, which is now which is helpful for the maturation and then spermiogenesis. Okay. Okay, FSH not only stimulates spermatogenesis, but it also stimulates the production of the protein inhibin, which ultimately inhibits FSH secretion from pituitary by negative feedback. Interstitial Leydig cells secretes testosterone, and testosterone, through its conversion to estradiol, is the regulator of its own production, as estradiol has negative feedback system on the hypothalamus pituitary gonadal axis. This negative positive feedback is the principal mechanism through which the hormonal regulation occurs. So this picture here demonstrates the spermatogenesis, which is the complex procedure which occurs in the seminiferous tubules. Here we can see the cross-section of the seminiferous tubules. It is lined by the Sertoli cells, which are joined together by tight junctions. Sertoli cells surrounds and provide nutrients and stimulating factors to the developing germ cells. Primordial germ cells, also called spermatogonia, sits on the basement membrane. This is the basement membrane of the seminiferous tubule, and divide by mitosis to form the primary spermatocytes. Okay, and after the primary spermatocytes, they undergo the first meiotic division to form the secondary spermatocytes. This is the secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes are also the diploid cells having the 46 chromosomes. Followed by the first meiotic division comes the second meiotic division, which happens and forms the spermatids. Now, spermatids are now haploid and they have 23 chromosomes. Spermatids eventually mature into the spermatozoa by the process of spermiogenesis. This whole process takes place about 72 days. The spermatozoa leave the seminiferous tubules and pass to the epididymis for storage and maturation until the ejaculation. Spermatozoa that are not released are reabsorbed by the phagocytosis.
So, ejaculatory duct obstruction. Ejaculatory duct are paired visceral organs. एक मिनट फर्जी। अच्छा, सेमिन एनालिसिस की रिपोर्ट आपके सामने आ जाए तो व्हाट आर द पैरामीटर यू विल सी इन दिस रिपोर्ट? भाई किसने हमारे साथ ओपीडी की है? तो कितना होना चाहिए वॉल्यूम? 5 ml, ओके। कितना? 1.5, ठीक है। और फिर उसके बाद चलो एक एक बताते जाओ ना, तुम बताओ और क्या देखेंगे? सर काउंट देखेंगे। काउंट देखेंगे। काउंट कितना, एक्सपेक्टेड काउंट कितना होना चाहिए? 5 million, सॉरी 50 million। बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो। 5 to 20 million होता है। 20 मिलियन। 20 मिलियन से जो है अगर कम होगा तो ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। 20 मिलियन तक हम नॉर्मल रहते हैं। आगे और क्या देखते हैं? 3 चीजें और हैं। और मोर्टेलिटी देखते हैं। तो मोर्टेलिटी कितनी होनी चाहिए? मोर देन 70% होनी चाहिए। और ये भी थोड़ी ज्यादा है, इसको थोड़ा कम करो। कितनी होनी चाहिए भाई, किसी को पता है? 40%। 40% से 40% होनी चाहिए। और तीसरी चीज देखते हैं, और भी तो कुछ देखते हैं। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी कितनी नॉर्मल होनी चाहिए? अंदाजन बता दो बस। सारे नॉर्मल होने चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 4% से अगर ज्यादा है तो जो है वो ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। अच्छा, एक और चीज भी देखते हैं कि फ्रक्टोज पॉजिटिव है या फ्रक्टोज नेगेटिव है। अब ईडीओ हम कब सस्पेक्ट करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? कि एक आपके स्पर्म एनालिसिस की रिपोर्ट आपके सामने है और उसमें क्या होना चाहिए? वॉल्यूम, ईडीओ है, इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हाँ बिल्कुल, पहले तो हम वॉल्यूम को देख लेते हैं। जब बंद है इजैकुलेटरी डक्ट तो क्या वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज जो है, जब वॉल्यूम ही कम होगा तो फिर जो है काउंट क्या होंगे? वो भी कम होंगे। तो इसमें जो है वो लो वॉल्यूम भी होता है और सीवियर ओलिगोस्पर्मिया भी होता है और सीवियर एजोस्पर्मिया भी होता है, ठीक है। तो if the patient have severe oligospermia with low volume or azoospermia with low volume, then and fructose is absent in the semen analysis report, then we suspect the EDO. समझ आया किसी को? भाई वो सलमान खान बता दो भाई। नहीं आगे वो हमारा, चलो बता दो, इस लाइन में खालिद है, ये बताते जाओ। मैंने क्या कहा? ईडीओ क्या है सर? एक तो आपने कहा फ्रक्टोज, इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन आप कब सस्पेक्ट करते हैं? एक तो आपने कहा सर काउंट लो होना चाहिए, बिल्कुल। और आपने कहा था कि फ्रक्टोज नेगेटिव होना चाहिए और वॉल्यूम लो होना चाहिए। सही है। तो जब वॉल्यूम लो होगा, एजोस्पर्मिया होगा या फिर जो सीवियर ओलिगोस्पर्मिया होगा और फ्रक्टोज नेगेटिव होगा, ये इस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट आई जिसमें जो है वो सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है और या एजोस्पर्मिया है और उसका वॉल्यूम भी लो है, लेस देन 1.5 ml, और उसमें फ्रक्टोज नेगेटिव है, और तो उसमें हम जो है सस्पेक्ट करेंगे EDO, इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है जी। किसका? pH का? Yes, pH has a little role because in EDO, the seminal vesicles are obstructed and they causes the semen to be alkaline. So if the semen is acidic, then we can suspect EDO, and if it is alkaline, then देखो, हाँ जी बोले। so if the semen is acidic, then we can suspect that it is ejaculatory duct obstruction. ठीक है, ये सेकेंडरी है। आपने जो है जो मेन पॉइंट्स है ना वो देखने हैं, ठीक है। तो तुम बता दो ईडीओ में क्या होता है, फुरकानी साहब। जी सर, there should be low volume and low sperm count. It could be oligospermia or azoospermia, and there will be low absent fructose in the semen. सही। The ejaculatory ducts are paired visceral organs positioned at the junction of vas deferens and the seminal vesicles. They enter the prostatic urethra at the level of utricle. Obstruction of ejaculatory ducts can lead to azoospermia. Obstruction can be complete or incomplete, anatomical or functional, and congenital or acquired.
Transurethral resection of ejaculatory ducts, or TURED, can relieve the obstruction. 65 to 70% of the males show improvement in semen quality after TURED. 30% pregnancy rates can be expected. So we just had this discussion about this whole thing, that how can we classify the EDO by the semen analysis. If the EDO is incomplete, the ejaculated volume is low or normal, sperm count will be low, sperm motility would be low, and ejaculate fructose would be present. But if the obstruction would be complete, the ejaculate fructose would be absent, the sperm motility would be absent, the sperm count would be absent, and ejaculate volume would be low. And if the EDO is functional, the volume would be low, sperm count would be either absent or low, sperm motility would be either absent or low, and ejaculatory fructose would be absent or low. So here in this picture, some anatomical causes of the EDO has been demonstrated. The different factors that can cause the obstruction are either stone, the cyst, or the stenosis of the ejaculatory duct. So we'll now see a short video that will show us the ejaculatory duct that how TURED is done for the ejaculatory duct obstruction. Ajay, how will you diagnose the EDO? Before going to this, how will you diagnose the EDO? एक तो आपने सेवन एनालिसिस की रिपोर्ट कर ली ना, देख ली, उसके बाद आप क्या करते हैं? हार्मोनल, अगर फ्रक्टोज नेगेटिव है तो हार्मोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अगर फ्रक्टोज, यही अगर सिनेरियो होता कि एजोस्पर्मिया होता और फ्रक्टोज पॉजिटिव होता तो मैं कहता कि हाँ हार्मोनल एनालिसिस करें, ठीक है. तो फिर क्या करेंगे आगे? ट्रस्ट करेंगे. ट्रस्ट में आपको क्या मिलेगा? देयर इज अ डायलेटेड सेमिनल वेसिकल एंड द डक्ट इज आल्सो डायलेटेड. So dilated seminal vesicle with duct of the seminal vesicle is also dilated, then this may cause EDO. Okay. Chalo. Next. So this is क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं? Now there is the opening of the ejaculatory duct is visible. There is the opening of right ejaculatory duct.
जी जुबैर साहब, कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, कौन सा नाइफ था भाई? किसने बोला? मोनोकुलर। इतने पीछे हैं आप लोग। नहीं नहीं, दिस इज कोल्ड नाइफ, दिस इज कॉलिंस नाइफ, हॉट नाइफ। चलें। So complications of TURED. जी जी जी। Actually, I have seen this procedure being done by Dr. Aziz Abdullah. There was once a young guy of about 17 or 18-year-old. He came with a complaint of inability to ejaculate. He was brought by his friends in OPD. So they were very curious about it. So when we investigated, we did the test. There were cystic structural Dilatation of- openings of both the ejaculatory ducts. So he did TURED. But that were very initial days of my residency. But now whenever we do urethroskopy, cystoscopy, even when we do TURP, I am never able to appreciate these openings of ejaculatory duct. So is it something when it's abnormal only then it's visible, or in a normal prostatic urethra it is visible, or Okay. never? So these are not visible usually. These are present at the floor of the verumontanum, so we cannot see this. But if they are obstructed and then we release the obstruction, then can we see the opening of the ejaculatory duct. Usually we cannot see the in urethroskopy we cannot see the ejaculatory duct. Okay. And we use a 0-degree lens when we are doing this For TURP. for urethral surgery, you have to use the 0-degree lens. Okay. Complications of TURED. Complication rate from TURED is approximately 20%. Most complications are self-limited. They include hematospermia, hematuria, UTI, epididymitis, and watery ejaculate. Rare complications include retrograde ejaculation, rectal perforation, and urinary incontinence. Vasectomy and vasectomy reversible. Permanent method of contraception for men. It is highly effective male contraception. Nearly 6% will eventually wish to have it reversed. Cause of vasal obstruction other than vasectomy include infection, congenital trauma, and previous surgery. Problem of duct obstruction should be suspected in men with normal testis size, normal hormones, and azoospermia. 95% patients may have return of sperm after vasovasostomy. If vasal fluid below the level of vasectomy does not contain sperm, epididymostomy is done. 60 to 65% of men will have sperm ejaculate following epididymostomy. So over here in this picture, we can see the vasectomy. First, the picture is showing us vasectomy, and in the second picture, we can see the vasectomy reversal that has been done. Successful vasovasostomy relies on accurate mucosa to mucosa approximation. Attention free. अच्छा एक मिनट रुक जाओ. Obstructive azoospermia क्या होता है? What is obstructive azoospermia? Azoospermia with obstruction in the vas or epididymis level. ठीक है. So what are the changes in the semen parameters occurs in the obstructive azoospermia? क्या क्या होगा भाई? वॉल्यूम. अब हमें 4 चीजें देखनी है ना. वॉल्यूम क्या होगा आपके ख्याल में? अगर इजेक्युलरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर जो है वो लो वॉल्यूम होगा, वरना वॉल्यूम नॉर्मल होगा. ठीक है. अगर ऑब्स्ट्रक्शन एट एपिडिडाइमस है या ऑब्स्ट्रक्शन एट वास है तो फिर जो है वो वॉल्यूम ठीक होगा. काउंट में क्या होगा? व्हाट इज एजोस्पर्मिया? हाँ, 0 sperm count in semen. Okay. So तो उसमें क्या होंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में क्या होगा भाई? 0 हो गए ना, काउंट 0 होंगे. उसके बाद फिर जो है वो फ्रक्टोज अगर नेगेटिव हो तो हम ईडीओ सस्पेक्ट करेंगे. अगर फ्रक्टोज पॉजिटिव हो देन वी सस्पेक्ट द ऑब्स्ट्रक्शन एट द एपिडिडाइमस और वास लेवल. ओके, सही है. और फिर आपको ये पेशेंट आ गया, 20 इयर्स का बॉय है, उसने जो है अभी भी मैरिड हुआ है और फिर 1 साल हो गया है. Now he is presenting with the infertility. Now semen analysis shows the volume is normal and
there is no sperm, azoospermia is there, and and fructose is positive. Okay, तो now what next? क्या करेंगे हम आगे? आप लोग हमारे साथ करते रहे हैं ना ओपीडी, तो हम क्या करेंगे आगे? सबको समझ आ रहा है? असल में ये जो है 2 लेक्चर्स हुए नहीं है जो पहले होने चाहिए थे, जिसमें जो है इनफर्टिलिटी होती क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। इस वजह से आप लोगों को शायद थोड़ी मुश्किल हो रही हो। अभी आपको समझ आ रही है सारी चीजें, सिनेरियो समझ आ गया? किस किस सिनेरियो समझ नहीं आया? सबको समझ आ गया सिनेरियो? तो एक रिपीट करते कोई, मुझे पीछे वाला कोई, कश्मीर से लोग जो आए हुए हैं उनको दे दो जल्दी। सिनेरियो क्या पूछा है मैंने? हाँ बोल दो। फ्रक्टोज पॉजिटिव है भाई। फ्रक्टोज नेगेटिव, अगर स्पर्म काउंट 0 होगा और फ्रक्टोज नेगेटिव होगा, देन वी सस्पेक्ट द ईडीओ। अगर फ्रक्टोज पॉजिटिव होगा और एजोस्पर्मिया होगा और वॉल्यूम ठीक होगा, तो देन वी सस्पेक्ट द ऑब्स्ट्रक्शन एट द वास और एपिडिडाइमस। अब अगला लेवल है, ठीक है, तो उसके आगे क्या करना है हम क्या कराते हैं यूजुअली ओपीडी में? आप लोगों ने, सबने हमारे साथ, फुरकानी साहब बताएंगे। गुड, फुरकानी साहब बताएंगे। उश तेरी तो। अच्छा बताओ, नजम बताएं आप क्या करेंगे? हार्मोनल वर्कअप करेंगे to FSH, LH and testosterone. Okay, or when there is a FSH and LH are normal, FSH and LH क्योंकि sperm production हो रही है लेकिन वो obstructed है कहीं वास और एपिडिडाइमस पे, तो समझ आ रहा है सबको या नहीं? तो if FSH and LH are normal, then we suspect there is an obstruction at the epididymis or वास लेवल। ओके, अच्छा उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद हम कुछ नहीं करते, पहले करते थे, अब कुछ नहीं करते, हम ऑस्ट्रियन कॉन्सेप्ट भेज देते हैं क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद नौमान साहब बताएंगे। भाई आपके पास नॉर्मल आ गया, उसका एफएसएच एलएच टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आ गया, अब आगे क्या करना है? तो पहली बात, जिस तरह हमारे पास नहीं, हम रेफर कर देंगे, वो लोग शायद सबसे पहले वेजोग्राफी करके लेवल ऑफ ऑब्सेशन, उससे पहले भी कुछ करना होता है। नजम बताएंगे, नजम ने अभी भी बहुत पढ़ा है। Biopsy. हाँ, we have to do the testicular biopsy to document that sperm is present or not. ठीक है, और टेस्टिकुलर बायोप्सी में हम देखेंगे कि there is a Johnson's score and it has 0 to 10 numbers. If Johnson's score more than 8, it means that there are in the cover slip or in a biopsy we have multiple spermatids and secondary spermatocytes. ठीक है, तो Johnson's score अगर more than 8 होगा, then we will go for आगे, अब आ गया वेजोग्राफी एंड रिकंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम। ओके, ठीक है, तो जब वेजोग्राफी कैसे करते हैं किसी को पता है? आपने देखी है एलएनएच में? अच्छा, कैसे करते हैं किसी को पता है? और कोई आज एग्जाम वाला कोई और नहीं आया हुआ ना, सिर्फ नजम भाई आए हुए हैं। In contrast, first of all, we identify the vast difference by dissecting the spermatic cord. Then after, so you will do the biopsy from inguinal region. Scrotal approach. Okay. By giving transfer, you have to give a small incision at the upper part of the scrotum. Yes, sir. Upper then part of the scrotum. You identify the vas. Yes, sir. And then you have to take the vas into the ceiling. Yes, sir. फिर क्या करेंगे? Sir, ये vasography है ना? Then we put the butterfly cannula in the lumen of the fast difference and we inject the dye. ये नहीं करेंगे, ठीक है? भाई किसी को पता है? फहद साहब बहुत पढ़ते हैं। नहीं आइडिया सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं,
मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो वी हैव टू गिव द इंसिजन, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन एट द वास, ओके। हमने इतना नहीं देना कि बिल्कुल ही वास आपकी डिटैच हो जाए, आपने एक अपर लेयर पे जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देना है। समझ आ रही है सबको, ठीक है। फिर उसके बाद देन वी द फ्लूइड इज कमिंग आउट, इफ एंड वी विल टेक दैट फ्लूइड ऑन टू द स्लाइड and then we put the cover slip on it, and then we will take this slide towards the microscope, and we'll see the microscope whether in the microscope whether sperm is present or sperm is not present. सही है, इतना समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब sperm is not present तो क्या मतलब है? पीछे से जो है एपिडिडाइमस में कोई प्रॉब्लम है, तो then we have to do the vasoepididymostomy, ठीक है। अगर आपको स्पर्म ही नहीं मिले तो आपने जो है वेजोएपिडिडाइमोस्टोमी करने, जहां पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज हो जाती है। फिर आप प्रॉक्सिमल एक इंसिजन देंगे एपिडिडाइमस पे, वहां पे जो है फिर दोबारा यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अगर आपको स्पर्म मिल जाते हैं तो आप वहां पर जो है वेजोएपिडिडाइमोस्टोमी कर देंगे। समझ आ रही है सबको, ठीक है। अच्छा, इफ सपोज स्पर्म आर प्रेजेंट, स्पर्म नहीं थे तो हमने क्या किया था? वेजोएपिडिडाइमोस्टोमी, ठीक है। स्पर्म अगर प्रेजेंट होंगे देन वी पुट a contrast, we will put a butterfly needle and we will put a contrast into the vas, okay, and then we see where is the obstruction is there. So if there is a small obstruction in the vas, then we have to do the vasovasostomy, ठीक है। जी 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 बोले। लेकिन अगर बहुत बड़ी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे CFTR में होती है, सिस्टिक फाइब्रस जीन म्यूटेशन में होती है, तो उसमें जो है हम नहीं कर पाते। तो अगर छोटा सा कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो जी हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, ये सर्जरी से पहले ही हमने टेस्टिकुलर बायोप्सी किया था, तो सीधा कि स्पर्म है या नहीं, तो उसके बाद हमें पता चला स्पर्म है। इसके बाद हम सर्जरी में गए। अब सर्जरी में जाने के बाद हमें तो पता है कि स्पर्म है, तो जो नहीं, अब हमें ये नहीं पता ना कि वास में स्पर्म है या नहीं। हमने तो ये पता है कि टेस्टिस में, सेमिनिफेरस में स्पर्म है, वो बन रहे हैं। सर पर फिर भी अगर हमने एट द बेस ऑफ द स्क्रोटम दिया, वास डिफरेंस आइडेंटिफाई किया, तो हम उसी वक्त वो जो आपने कहा था नहीं करना है, वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्पर्म तो है, बस अब विजियोग्राफी करके हम साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हैं डायरेक्ट उधर। कर सकते हैं सारी चीजें, अगर आपने पेशेंट को एक्सप्लेन किया है तो आप जो है सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो डेफिनेट रिपोर्ट नहीं आती, आपके पास 8 से 10 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, उसमें जो है फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह के स्कोर है। कभी आपको समझ नहीं आता, बहुत सारी चीजें हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज भी हैं, तो आप कंबाइन भी कर सकते हैं चीजें, ठीक है। और सेंटर्स में कंबाइन भी करते हैं, लेकिन आपकी कंसेंट ली हुई हो और सारी चीजें की भी हो, कर सकते हैं सारी चीजें। नहीं मतलब ये जो हम लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन जो देते जाते हैं मल्टीपल लोकेशन पे टू आइडेंटिफाई द साइट, ये करने से डायरेक्टली पहले वही कैनुला डालकर वो कॉन्ट्रास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने कहा था नहीं करना है। नहीं, देखिए कॉन्ट्रास्ट हम जो है वो डिस्टली डाल रहे हैं, प्रॉक्सिमली नहीं डाल रहे, हम डिस्टली डाल रहे हैं ना। तो हम एक और, अब हम क्या करेंगे, जब हमें वास में नहीं मिला तो हम देन विल गिव द इंसिजन। अब वो जहां पे जो है, जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो क्या होता है, किसी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो क्या होता है, देयर इज अ नैरोइंग एंड प्रॉक्सिमल टू दैट देयर इज अ डायलेटेशन। सो वील गिव द इंसिजन एट दैट पार्ट देयर इज अ डायलेटेशन। सो इफ द स्पर्म इज प्रेजेंट देन वी हैव टू डू द वेजोएपिडाइडमोस्टोमी। समझ गए? ठीक है ना, सही है। अच्छा फिर जी जी, ये वेजोग्राफी हम फिर टुवर्ड्स द एपिडिडाइमिस नहीं, टुवर्ड्स द वास, टुवर्ड्स द वासल, ओके। करेंगे हम दोनों में। वेजोएपिडाइमोस्टोमी भी करने जा रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम करेंगे दोनों में ये प्रोसीजर। लेकिन हम अगर स्पर्म नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, वेजो एपिडाइमोस्टोमी। और अगर स्पर्म मिल गए तो फिर हम जो है वो ये इनिशियल इंसिजन पे, वास पे। समझ आई किसी को? चलो मुझे कोई बता दे क्या समझ आया। जी जी बोले। सर बायोप्सी पे तो अगर हम स्पर्म मिल गए पहले, तो देन तो हमें जस्ट वेजोग्राफी करके साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पता। तो ये वो वेजोग्राफी के स्टेप्स हैं भाई। नहीं, जस्ट विद बटरफ्लाई नीडल आई एम सेइंग। नहीं, आप कैसे बता सकते हैं कि एपिडिडाइमस में प्रॉक्सिमल? आप तो डिस्टल ही डाल रहे हैं ना।
तो proximally तो आप डाल नहीं Before रहे। giving the incision, if we just put the butterfly और जब हमें जब जो है करना ही है वैसो एपिडिडाइमोस्टमी, तो हम इंसिजन वहां पे भी देंगे। तो ये स्टेप्स है सारे। ओके ठीक है Sir, 10 minutes are left. अच्छा चलो ठीक, नहीं तो 10 आगे कर लेंगे और भी अगली उसमें कर लेंगे। Successful vasovasostomy relies on an accurate mucosa to mucosa approximation, a tension-free and leak-proof anastomosis, good blood supply, healthy mucosa and muscularis, good atraumatic anastomotic techniques. Before attempting surgical reconstruction of the reproductive tract, adequate spermatogenesis should be documented. A prior history of natural fertility pre-vasectomy is usually adequate. Post-op followed with semen analysis at 6 weeks, 3 weeks, and 12 months would be done. So these two pictures here compare the changes in the semen analysis after the vasectomy and after the vasovasostomy. So in the first picture, the first circle, we can see the semen analysis that was done before vasectomy. This is a healthy male with a good reproductive system. He had good sperm count. After the 3 months of vasectomy, we can see a significant decline in the number of these sperms, whereas after the 6 months, there is total absence of any sperm. Then this patient underwent vasovasostomy, and after 3 months, we can see that some of these sperms have returned, and after 6 to 12 months, we can see that the sperm count is of any normal male. So let us see the video of the vasovasostomy. Pen kare. A vasovasostomy is one surgical procedure used to reverse a vasectomy. The animation provides a brief overview of the relevant anatomy, with the vas deferens, prior vasectomy site, epididymis, and testicle highlighted. The procedure is performed by placing the patient under anesthesia, after which a midline scrotal incision is made in the scrotum. This is usually not much bigger than is required to perform the original vasectomy. The segment of vas deferens that was previously blocked or transected at the time of the initial vasectomy is identified, brought through the surgical wound, and resected. After this, the fluid is sampled from the testicular end of the open vas deferens. This fluid is then analyzed under a microscope to determine if any sperm are present. In this particular case, an abundant number of motile sperm are visualized. This would suggest that we can proceed with reattachment of the vas deferens directly. To accomplish the reattachment, initial stitches are initially placed to reapproximate the vas deferens. After this step, several intraluminal smaller sutures are placed to bring the lumen of the vasa together. Additional sutures are then placed to completely enclose the opening of the vas, and final supporting sutures are placed to reinforce the newly attached vas deferens. Once the sutures are tied, the final connection is complete, and the vas deferens is returned to its normal location. The animation demonstrates the final result of a vasovasostomy. So which suture is used for vasovasostomy? कौन सा suture use करते हैं? And what is the name of that technique for vasovasostomy? क्या होती है? कौन सी technique होती है और कौन सा suture use करते हैं? 10-0 nylon, and we need a microscope to see that suture. Okay, and the name of the technique is शौला को आ रहा है लगता है माइक्रोसर्जिकल डॉट टेक्निक, माइक्रोसर्जिकल माइक्रो डॉट टेक्निक. ठीक है, वी हैव टू अप्लाई 6 डॉट एट डिफरेंट पोजीशन एंड देन वी हैव टू जॉइन दैट डॉट्स. जी इसमें स्पेचुलेट यूजुअली नहीं करते, इसमें बहुत ही नैरो ल्यूमन होता है, तो इसमें स्पेचुलेशन का कोई रोल ज्यादा है. बिल्कुल. तो क्या होती, कौन सी टेक्निक होती है? माइक्रो सर्जिकल माइक्रो डॉट टेक्निक. ठीक है, और सूचर कौन सा यूज करते हैं? नायलॉन 10-0. ठीक है, आगे. क्या हुआ? कुछ कहा किसी ने? किस चीज का? वो परमानेंट सूचर है, वो बंद नहीं होगा. ठीक है, और उसमें जो है वो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन जो है वो परमानेंट सूचर है, वो कभी भी जो है डिसॉल्व नहीं होगा, और उसमें जो है रिएक्शन भी कम होता है. ठीक है जी. Epididymovasostomy or vasoepididymostomy. The animation provides a brief overview of the relevant anatomy, with the vas deferens,
Prior एक vasectomy मिनट site, इसमें जो है ना वो epididymis, वेजेक्टमी के तरह दिया है ना, लेकिन वो जो है हम इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में भी कर सकते हैं. ठीक है, चलें. and testicle highlighted. This procedure begins in a similar manner to a vasovasostomy. A midline scrotal incision is made, after which the obstructed vasal segment is removed, and the fluid on the testicular side is sampled under microscopy. In this particular case, microscopic analysis does not demonstrate the presence of any sperm. In that scenario, we would proceed with an epididymovasostomy. The scrotal midline incision is extended, after which the testicle is delivered through the wound. This permits better visualization of the epididymis. Next, the epididymis is incised, and an obstructed epididymal tubule is selected for anastomosis. The vas deferens is brought down to the level of the epididymis and secured using some initial stitches. Two double-armed, smaller sutures are then placed into the epididymal tubule, after which the epididymal tubule is incised. The fluid is again sampled, and this time demonstrates the presence of normal sperm. Once sperm are identified, the stitches are then placed inside the lumen of the vas deferens, and the vas deferens is tied down to the epididymal tubule. Additional stitches are then placed to secure the vas deferens to the epididymal sheath for additional strength. This final animation demonstrates the postoperative result with the attachment of the vas deferens to the epididymis directly. So we now talk about the assisted reproductive techniques. Any treatment that deals with means of conception other than vaginal intercourse is termed as assisted reproductive techniques or ART. A variety of methods currently exist to manipulate gametes and embryos outside of a woman's body and to return the results into the female reproductive tract. These techniques are collectively known as assisted reproductive technologies. These include in vitro fertilization, artificial insemination, gamete intrafallopian transfer, and intracytoplasmic sperm injection. For assisted reproductive techniques to work, first we need to retrieve the sperm due to different methods. So this is the chart that shows that what are the different techniques that we can use to retrieve sperm in different cases. In the case of the obstructive azoospermia, we can either do the percutaneous epididymal sperm aspiration, that is PISA, or macrosurgical epididymal sperm aspiration, that is MESA, or open epididymal fine needle aspiration. We can also do the TESA, that is percutaneous testicular sperm aspiration, in the case of obstructive azoospermia, as well as failed epididymal retrieval in obstructive azoospermia cases, epididymal agenesis in the incomplete absence of vas deferens, and we can also do the TESI, that is testicular sperm extraction. In the case, it is also done in the case of obstructive azoospermia, and microtesi, that is done in the case of non-obstructive azoospermia. So this is the picture that shows us the difference between these two techniques. This is the TESA. TESA is a manual procedure that typically takes 5 to 10 minutes under the sedation. It is generally an option for the man with obstructive azoospermia, where it is expected that sperm will be found easily because we just go blindly with a needle inside the testes. And this is the PISA, that is percutaneous epididymal sperm aspiration. In this also, we insert a needle directly inside the epididymis. Then there is a MESA. In MESA, it is a technique used for men with no sperm in their semen because of a blockage or an absence of the vas deferens. Okay, so these are the different indications of these techniques. So let's watch a short video of the MESA.
Microdissection testicular sperm extraction. This is an animation demonstrating the microdissection TESI operation. The test is using the microscope and dissection testicular sperm extraction. This is an animation demonstrating the microdissection TESI operation. The testis is bivalved with an ophthalmic microknife along an equatorial plane in the middle in a transverse orientation, and one of the first steps in the operation is to expose the tubules and visualize the tubules using the microscope. One of the important ways in which a micro-TESI differs from a regular testis biopsy is the identification and removal of tubules that are of interest. The microdissection TESI technique involves identifying and exposing the testis, and the microscope is brought into the surgical field. Testicle is bivalved along an equatorial plane and carefully dissected to make sure that the tubules are still preserved within the testicle. Under high-power operative microscope, tubules are carefully dissected to sample 1 or 2 tubules at any given time. This operative image identifies a tubule that appears larger, as shown in blue, compared to the tubules that surround these tubules that appear flat and atrophic, as marked in the green. Once these tubules are removed, around 10 to 12 tubules are removed per testicle. They are placed in an Eppendorf tube and cut with iris scissors. Following scissor processing, the tubules are passed through a 24-gauge angiocat such that the sperm inside the tubules can be released. 1 drop of this testicular fluid is placed on a specimen to be able to identify sperm under a microscope, usually with the presence of an embryologist. If sperm are identified, the testicle is then proceeded to be closed with a running suture. The postoperative care, patients usually go home the same day. Patients remain in bed rest for about 24 hours after surgery and remove the dressing for about 48 hours after the surgery. It is advised not to lift heavy things or go to the gym for up to about 2 weeks after surgery. Patients are usually sent home with extra strength Tylenol, and there's usually no diet restrictions. Intrauterine insemination. Sperm is collected from your partner or donor and placed into woman's vagina or cervical canal or uterus. Intrauterine insemination is the simplest and least expensive method of assisted reproductive techniques. Indication include at least 1 fallopian tube must be normal and patent. We do intrauterine insemination when the normal fertilization could not occur because either of the cervical factors, coital problem, or there is unexplained infertility. In vitro fertilization. A woman's egg are removed from the ovary and mixed with the sperm in the laboratory. Then once fertilized, the embryos are placed into the woman's uterus. The main difference between the artificial insemination and in vitro fertilization is that artificial insemination is the deliberate introduction of sperms into a female cervix or a uterine cavity, achieving in vivo fertilization, whereas in vitro fertilization is the process of fusion of eggs and sperm outside the female body. We can see this in this diagram that in artificial insemination we are directly introducing sperms into the uterus, whereas in vitro fertilization the gametes are mixed in the petri dishes in the laboratory and the embryos are then transferred inside the body. Intracytoplasmic sperm injection. Intracytoplasmic sperm injection is a specialized form of IVF that is used primarily for the treatment of severe cases of male factor infertility. ICSI involves the injection of a single sperm into a mature egg.
A single spermatozoa is taken. This in the cases of the severe male infertility. So, once the single spermatozoa is taken, it is introduced directly to the cytoplasm of the oocyte through the zona parasita. So here we can see that different oocytes are being injected these spermatozoa inside the cytoplasm directly. Now sperm is inside the cytoplasm of the oocyte. Now another oocyte is being injected the sperm. So this is the picture where we can see the difference between the IVF and ICSI. In IVF, the sperm and oocytes are allowed to mix together in the petri dish in the laboratory, where in ICSI, the sperms are directly injected under the macroscopic control inside the cytoplasm of the oocyte. Gamete intrafallopian transfer. A mixture of woman egg and sperm are placed into the fallopian tube during laparoscopy. Once inserted, fertilization is allowed to occur. These are mostly done in the cases of the female reproductive tract infertility. Adoption. This is an alternative to infertility treatment. Literally, it means taking over. That is, adoption means voluntarily accepting another's as one's blood and treating them the same as one would their own child. Legally, adoption means a process of transferring the entire legal parentage of a child from his natural parents to the adoptive parents. Thank you.